Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ankit and I'm back with another fresh informative video. In today's video, I'll be talking about 5 common mistakes for IELTS writing for both task 1 and task 2 जो students अक्सर करते रहते हैं and that reduces their band significantly, right? IELTS का writing का जो part होता है उसमें band drop हो जाता है and that ultimately affects your overall IELTS examination score and फिर से अगर वो minimum requirement से कम आता है then it will hamper your enrollment in Canadian colleges or universities. So everything is linked. This video is going to be super important. पूरा वीडियो को देखना and वीडियो शुरू होने से पहले सेम रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because a lot of crucial information is coming on your way. And without any further bullshit, let's jump into the video. The first mistake that students generally make in their IELTS writing task 1 and task 2 is that they write below 150 words for task 1 and they write below 250 words for task 2. Alright, तो ये आपको दिमाग में रखना है. You should always write at least 170 to 190 words for task 1 and you should at least write 270 to 300 words for task 2 because अगर आप basic limit जो question में दिया रहता है that is 150 words for task 1 and 250 words for task 2, अगर उससे आप कम लिखते हैं then आपको एक penalty मिलेगा and the penalty will result in reducing your band score significantly. So you cannot afford to write below the basic limit that is 150 for task 1 and 250 for task 2. Always write 170 to 190 for task 1 and 270 to 300 for task 2. And there's a twist here again. आप बहुत ज़्यादा भी नहीं लिख सकते हो. The first criteria is अगर आप कम लिखते हो then आपको penalty for sure मिलेगा. But if you write excessive, आप 350, 400 words तक लिखते हो then again you'll be receiving a penalty which will again reduce your band score. तो एक basic range में लिखना है. 300 is the maximum limit, maximum upper limit for task 2 and 190 to 200 words is the maximum upper limit for task 1. You should keep this in mind and execute it properly in your IELTS writing examination. The second mistake is using informal writing style for task 1 and task 2. If you use informal and friendly style of writing, friendly vocabs, casual vocabulary, then your band won't get high because for IELTS writing for both task 1 and task 2, the approach should be very formal with proper use of vocabulary and phrases. Mind you, I repeat, formal approach होना चाहिए, formal vocabs use होना चाहिए, and there is again an important factor to note here. You cannot use any abbreviations like can't, won't, shouldn't, wouldn't. ये सारा कुछ use नहीं कर सकते. Because this is the approach of informal vocabulary and informal is not allowed. Allowed का कुछ नहीं है, use कर सकते हो but band score again कम आएगा. You should always use formal approach, formal style and formal approach में you cannot use any abbreviations. It should be always cannot, would not, should not, do not, right? No abbreviations will work in IELTS writing. You should keep this in mind. This is my point number 2. The third mistake, which is again super important, it is repeating the same words, phrases or idioms more than twice in your essay or in your IELTS writing task 1, which is a report writing, right? तो आप अगर आप same words use करते हो, same words or group of words, if you use those again and again in your essay, then it will signal the examiner that you lack a proper range of vocabulary and hence the examiner will give you low marks on lexical resource, which again holds a weightage of 25%. ठीक है, IELTS writing में जो वेटेज रहता है 25%, 25%, 25%, 25%, दैट इज टोटल 100%. उस 100 में से लेक्सिकल रिसोर्स का अलोन है 25% वेटेज एंड अगर आप सेम वर्ड, सेम फ्रेजेस, सेम इडियम्स यूज करते हो बार बार इन योर IELTS राइटिंग, दैट विल सिग्नल द एग्जामिनर दैट यू हैव अ वेरी वीक रेंज ऑफ वोकैबुलरी, यू आर नॉट दैट गुड इन लेक्सिकल रिसोर्स एंड आपका 25% ऐसे ही चला गया. इट्स जस्ट गॉन लाइक दिस, ठीक है, एंड इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल IELTS राइटिंग स्कोर. सो यू शुड नेवर रिपीट द वर्ड्स एंड इसका सोल्यूशन क्या है? यू शुड ऑलवेज लर्न 2 to 3 synonyms at least for a mainstream word. अगर आप plethora, let's take an example of the main word which is plethora. Plethora का मतलब है plenty. तो synonym of plethora is plenty, many, enormous. enormous नहीं, मैं गलत बोल दिया. प्लेथोरा का 2-3 सिनोनिम नेट में देख लो, मुझे 2 पता है, प्लेथोरा, प्लेंटी, मेनी, ठीक है. टन्स ऑफ, द थर्ड सिनोनिम इज टन्स ऑफ. तो आपको ऐसे करके सिनोनिम्स जान लेना चाहिए so that if you use the main word once in your essay, for the next time you can use their synonyms. And synonyms ज़्यादा से ज़्यादा अगर synonyms use करते हो then आपका band score कम नहीं आएगा, ऊपर से band score increase होगा because it will signal the examiner that you're super good with your lexical resource, super good with your range of vocabulary. So use synonyms and never use the same words again and again in your essay or in your report writing, that is IELTS task 1. The fourth major mistake that students generally make in their IELTS writing is that the lack of use of complex sentences. This is a golden rule. The higher or the more number of complex statements you use in your IELTS writing, the higher will be your band score. ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट यूज़ करो एंड उससे आपका बैंड स्कोर ऑब्वियसली हाई आएगा. द लेसर द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स द लेसर विल बी योर बैंड. दिस इज अ गोल्डन रूल, यू शुड कीप इन माइंड. अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होता क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल दिस अ स्टेटमेंट,
आई स्टे एट ब्रैम्पटन, इधर मैं बता रहा हूँ मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ। इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, डायरेक्ट मैं बता दिया मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या होगा, आई स्टे 30 minutes अवे फ्रॉम डाउनटाउन टोरंटो इन अ सिटी कॉल्ड ब्रैम्पटन। बस घुमा के बताना है, एड्रेस वही है, सिटी वही है, बस घुमा के बताना है कि माई सिटी इज 30 minutes अवे फ्रॉम डाउनटाउन टोरंटो। सो दिस इज द इनडायरेक्ट अप्रोच एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से ला दूंगा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के ऊपर। सो द मोर यू यूज सच इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स द हायर विल बी योर बैंड, दैट्स इट। द फिफ्थ एंड द फाइनल मिस्टेक दैट स्टूडेंट जनरली मेक, एंड ये बहुत सिग्निफिकेंटली बैंड स्कोर को अफेक्ट करता है, सो यू शुड करेक्ट दिस मिस्टेक। अगर आपको पता नहीं है सुन लो अच्छे से। द मिस्टेक इज मिसिंग एन ओवरव्यू और कंक्लूजन। फॉर IELTS writing task 1 you only write a conclusion, all right, and for task 2 you only write an overview। दोनों मत लिखना, अगर आपको लगता है कि दोनों लिख दूंगा तो सेफ साइड हो जाओगे, ऐसा मत करना। इट विल अगेन रिड्यूस योर बैंड स्कोर बिकॉज रूल इज डिफरेंट। रूल के मतलब बेसिस पे फॉर टास्क 1 यू शुड ओनली राइट अ कंक्लूजन एंड फॉर टास्क 2 यू शुड ओनली राइट एन ओवरव्यू। अगर दोनों का डिफरेंस जानना है तो IELTS राइटिंग का वीडियोस देखो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख जाएगा, वॉच दैट एंड इट विल बी क्लियर टू यू। एंड सो डोंट कंफ्यूज ओवरव्यू एंड कंक्लूजन, दोनों अलग चीज़ है, दोनों अलग राइटिंग टास्क के लिए बने हैं। एंड दीज टू आर सुपर इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू हैव 5 minutes लेफ्ट एट द एंड, आपने राइटिंग कर लिया, बस 5 मिनट बचा है, 5 मिनट को रिविजन के लिए मत यूज़ करो, उस 5 मिनट को डिवाइड करो 2.5 minutes में। यूज़ द फर्स्ट 2.5 टू राइट अ कंक्लूजन फॉर टास्क 1 एंड द नेक्स्ट 2.5 टू राइट एन ओवरव्यू। बिकॉज अगर ये आप बता सकते हो इसका 25% वेटेज है, अगर ये आप नहीं लिखते हो देन जितना भी अच्छा आप राइटिंग बाकी पार्ट लिखे हो इट विल नॉट मैटर, बिकॉज आपका मेन कंक्लूजन एंड ओवरव्यू जो इन अ नटशेल आप बताते हो, पूरा जस्ट बताते हो, अगर वो मिसिंग रहता है देन आपका बैंड स्कोर ऑब्वियसली कम आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो अगर जितना भी टाइम बचा है एटलीस्ट राइट 1 or 2 स्टेटमेंट्स अबाउट कंक्लूजन एंड 1 or 2 स्टेटमेंट्स अबाउट ओवरव्यू, ठीक है, डो नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो देन देयर इज अ बोनस टिप फ्रॉम माय साइड, दैट इज नॉट यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स। दिस इज अनदर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो लोग लिंकिंग वर्ड्स यूज नहीं करते। लिंकिंग वर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक मोरओवर, हाउएवर, सब्सिक्वेंटली, इन एडिशन टू एक्सेट्रा टू लिंक स्टेटमेंट्स एंड पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा IELTS राइटिंग का वीडियो देख लो, मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया हो, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, ओवरव्यू, कंक्लूजन, सारा डिटेल्स मेंशन किया हुआ है इस वीडियोस में, जाके देख लो। एंड माइंड यू यूज लिंकिंग वर्ड्स टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर, ठीक है। पैराग्राफ्स एंड स्टेटमेंट्स को लिंकिंग वर्ड्स के बेसिस पे कनेक्ट करो, हाउएवर, मोरओवर, इन एडिशन टू, सब्सिक्वेंटली, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करो। और यू कैन जस्ट गूगल अबाउट लिंकिंग वर्ड्स फॉर IELTS एंड गेट अ कंप्लीट लिस्ट, जस्ट लर्न देम, प्रैक्टिस देम एंड एग्जीक्यूट देम इन योर IELTS राइटिंग एग्जामिनेशन। एंड सेकंड चीज़ जो बोनस में पड़ता है, बताओ मैं चश्मे के बिना कैसा लग रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो चश्मा था मुझे मिल नहीं रहा है, शायद टूट भी जा सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो अभी कुछ दिन के लिए बिना चश्मे के झेलना होगा until I find it or until I make a new chashma for myself. Doesn't it look cute? क्या उन्हें बताओ। Anyways, all right, these were the major mistakes that you may make in your examination or students generally make in their examination and wonder why their band score are coming low, because वो लोग को पता भी नहीं होता and वो लोग ये mistake कर देते एग्जाम में and their band score are significantly affected, बहुत कम आ जाता है IELTS writing में specifically। and जैसा मैंने बताया एक मॉड्यूल में कम आएगा तो overall IELTS में कम आएगा and that will affect your enrollment in colleges and universities and in any foreign country, ठीक है। तो mistakes को सही करो and nail your IELTS writing module specifically। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज 100 के भी तो करने हैं। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। सनी के शाह साइनिंग ऑफ फॉर द डे।